Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start syllabus of first year computer science, and this is going to be very first lecture, and we are going to start unit number 1, that is computer systems. The topic we are going to cover is unit introduction. But before jumping into the lecture, let's reveal the secret to the success. आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक है, अगर आप इस फार्मूला को फॉलो करेंगे, आई गारंटी यू गाइस 100% सक्सेस. तो वेरी फर्स्ट इज learn the topic, memorize the topic, and revise it again and again. And now let's see what's the agenda of today's lecture. So agenda of today's lecture is we will cover 2 points, that is very simple concepts. First, what is a computer? Second, how computer works. And this is a paragraph I have taken from your book. Most of the guys are very familiar with the concept explained in this paragraph, but we'll see what's new to learn in this very short quick overview. So let's get started, and we will start with a very simple question, that what is a computer? I know you all guys must be knowing the answer of this question, but we will have a very quick overview by considering a very simple example from your daily life. So consider example of human body plus soul. Human body is basically tangible. We can see it, we can touch it. And soul is the intangible. We can't see it, we can't touch it. But the combination of human body plus soul results to life. It results to live human body. Likewise, computer is basically the combination of 2 components. The first one is hardware, that is tangible. We can see that, we can touch that. But the software, that is intangible. We can't see that. But the combination of hardware and software results to a functional computer. In this slide, you can see the hardware parts. You can see the transistors, capacitors, silicon chips. On the other hand, on the software part, you do have different softwares installed on your system, on your PC. For example, Chrome hai, Windows, and Paint, Microsoft Word, etc. Now let's come up with a clear question with its very precise answer. That question is, what is a computer? And the answer is, we have already seen that computer is a sophisticated combination of 2 components, hardware and software. And the most important part is they work together. First thing you have to memorize, it's a sophisticated combination of hardware and software. The second part is they work together. Now the question arises, why they work together? So they work together to process information, to solve different problems, and to execute a multitude of tasks. Multitude means multiple tasks, lots of tasks, a large number of tasks. So whenever there may be a question that what is a computer, so you have to come up with a complete and precise answer. That first thing, it's a combination of hardware and software components. Second part, that work together. And third, why they work together? To process information, to solve problem, and execute multiple tasks. Very next simple question is how computer works. And to answer this simple question, we need to refresh our concept about computer, that computer is basically a digital machine. It's a digital machine because it operates based on 2 things. Number 1, digital data. Number 2, binary logics. Digital data. So digital data is also known as binary data. Bi means 2. So binary data is always in the form of zeros or ones. So the data in the form of zeros or 1 is known as binary data. और यही binary data जो है वो basically समझ आता है computer को. Computer don't understand any other thing. It only understands
द लैंग्वेज ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस. तो हम जो ह्यूमंस हैं वी एक्चुअली अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, फ्रेंच, चाइनीज़, बट for computer it only understands the language of zeros and one. It only understands binary language. And the next thing is binary logic. For binary logic there's a use of logic gates, and we do have an understanding of different logic gates. For example, AND gate, OR gate, NOT, NAND, NOR, XOR, and exclusive OR. The next is input data. First of all, we need to understand that कंप्यूटर की वर्किंग में होता ये है कि जब भी आप उसको इनपुट देते हैं, फॉर एग्जांपल आप कीबोर्ड से प्रेस करते हैं स्मॉल ए या कैपिटल ए, होता ये है कि कंप्यूटर डोंट अंडरस्टैंड स्मॉल ए, कैपिटल ए, कंप्यूटर डोंट अंडरस्टैंड अल्फ़ाबेट्स, ही ओनली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस. तो वो क्या करेगा, कंप्यूटर सबसे पहले कन्वर्ट करेगा इनपुट डाटा इनटू द बाइनरी कोड. इनपुट डाटा को कन्वर्ट करेगा इनटू द डिजिटल कोड. डिजिटल कोड और बाइनरी कोड इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस. यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल अगर स्मॉल ए मैंने अल्फ़ाबेट लिखा है तो उसके अगेंस्ट मैंने बाइनरी कोड लिखा है 0110 0001. सो वी डू हैव 8 बिट्स कोड. बाइनरी कोड आपके पास जो अल्फ़ाबेट्स के अगेंस्ट होगा इट वुड बी 8 बिट्स एंड 8 बिट्स इज इक्वल्स टू 1 बाइट. तो 1 बाइट का आपका कोड होगा. दिस इज़ अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. स्मॉल ए लोअर केस में है, ए अगर लोअर केस में है, वी डू हैव डिफरेंट बाइनरी कोड. एंड अगर इफ़ इट्स इन कैपिटल ए वी डू हैव डिफरेंट बाइनरी कोड. सम different binary codes against different characters. If you guys are interested, you may have a look at this table. Otherwise, that's not the part of your course. ये बस मैंने ऐसे ही for extra information जो है वो मैंने यहाँ show कर दिया था. Now, in this slide, we need to learn that we have seen that the information, the data is firstly converted into the बाइनरी कोड. इस स्लाइड में भी आप देख रहे हैं कि एक सोर्स कोड है, कोई भी प्रोग्रामिंग का चंक है, कोई छोटा सा प्रोग्राम है बहुत सिंपल सा, उसको जो है वो कन्वर्ट किया गया है इनटू द बाइनरी कोड. अब ये काम कौन करता है? अगैन देयर इज़ अ सॉफ्टवेयर हु डज दिस वर्क एंड दैट सॉफ्टवेयर इज़ कॉल्ड कंपाइलर. कंपाइलर डज दिस वर्क. यहाँ पे जो बाइनरी कोड है उसको एग्जीक्यूटेबल कोड भी कहते हैं. दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मशीन कोड एंड दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ऑब्जेक्ट कोड. सो these 3 different terminologies are used for the same type of data. In this slide मैंने बहुत ही एक ओवरफ्लो आपको शो किया है, बहुत ही सिंपल करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल जो कन्वर्ट किया था कंपाइलर ने क्या किया था? फॉर एग्जांपल आपने प्रेस किया कीबोर्ड से कैपिटल ए, उसने उस कैपिटल ए को कन्वर्ट किया इनटू द बाइनरी कोड. देन दैट बाइनरी कोड विल गेट स्टोर्ड इन द मेमोरी. ठीक है, और फिर सीपीयू क्या करेगा? वो सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करेगा उस डाटा पे एंड वो डिफरेंट तरह के जो है वो ऑपरेशंस उस पर अप्लाई कर सकता है. दोज ऑपरेशंस कुड बी अरिथमेटिक, दोज ऑपरेशंस कुड बी लॉजिकल, दोज ऑपरेशंस कुड बी कंडीशनल. अब अगर अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई होगा तो उसके लिए सीपीयू का अलग से यूनिट है, दैट इज़ ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. And to perform logical operations, there's a control unit. And to perform the conditionals, and conditionals basically जो होती हैं वो decision making के लिए होता है. ठीक है, और अगर आपने कोई भी टास्क रिपीट करवाना है कंप्यूटर से, for that purpose we use the concept of loops. So this is the entire overview. This is the overall working. कि सबसे पहले कंप्यूटर ने क्या किया? डाटा को कन्वर्ट किया, उसके बाद उसने उसको मेमोरी में स्टोर किया, उसके बाद इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट की सीपीयू ने, देन उस पर डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई किए, एंड वंस द प्रोसेसिंग इज डन इट विल द रिजल्ट विल बी कन्वर्टेड बैक टू द ह्यूमन रीडेबल फॉर्म. और वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाएगा
then the result is displayed on the output devices. Means हमें monitor पे जो है वो output जो है वो show हो जाएगी. So अगर overflow देखा जाए तो हमारे पास क्या था? Let's have a very quick overview. कि first of all, the data is being converted into the binary code. Then binary code जो है, then binary data जो है, it will get stored in the memory. और memory में store होने के बाद CPU will perform series of instructions on that data. वो different operations apply करेगा. वो operations different हो सकते हैं, arithmetic हो सकते हैं, logical हो सकते हैं, and conditional हो सकते हैं. And once the processing is done, then the result is converted back into the human readable form, ताकि humans जो हैं वो उसको read कर सके. और आपके पास जो भी output आती है वो जाहिर बात है या तो आपके monitor पे आएगी, screen पे आएगी, या फिर आपको speakers पे कोई भी sound सुनाई देगी. तो आपके जितने भी output devices हैं उस पे आपको जो है वो result जो है वो displayed हो जाएगा. So that was the whole concept. So in today's lecture we have covered all this paragraph. And now this is the time for your assessment. Let's see what's the learning outcome from this lecture and how much you guys have learned. There will be 5 MCQs. There will be 5 MCQs, each carrying 1 mark. Let's evaluate your understanding and learning, and must comment below your score. If your 3 MCQs are correct, just type there 3 out of 5, 3, 4, 5. The total marks are 5, and there will appear first MCQs. Just pause the video, understand, read and understand, and choose the correct option, and then resume the video again to see the correct answer. So good luck, students.